Ma'am, we can start now. Okay. जैसा कि आप सभी को अवगत है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान अपने साप्ताहिक कार्यक्रमों के अंतर्गत नित्य नए कार्यक्रम को करता रहता है। इसी क्रम में आज हम वीकली फ्राइडे वेबिनार का आयोजन आपके समक्ष करने जा रहे हैं। क्रम से जुड़े समस्त विद्वज्जनों को, अतिथिगणों को एवं समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। कार्यक्रम का प्रारंभ हम प्रार्थना से करेंगे, जैसा कि हमारी संस्कृति है। आइए प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ी हैं मीरा के भोजानी मैडम, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे साथ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर आई बसवारेड्डी जी हमारे साथ नित्य नए कार्यक्रमों के साथ जुड़ते रहते हैं, परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इंट्रोडक्शन, हमारे जो स्पीकर आज हमारे साथ जुड़ी हैं उनके व्यक्तित्व से हमें परिचित करने के लिए हमारे संचार एवं प्रलेखन अधिकारी जी से कि वे हमारे आज के अतिथि महोदय का से हमें परिचित करवा। सर प्लीज। Thank you, thank you, Dr. Indu Sharma. Good evening, everyone. सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर मीरा की भोजवानी मैम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ for successful organization of Ayurveda Day. Morarji Desai Institute of Yoga also actively participated in Ayurveda Day and executed so many activities to make the day successful. And also various social media platforms. Today's esteemed speaker, respected Dr. Meera K. Bhojani ma'am, is an associate professor at Department of Kriya, Sharir, All India Institute of Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. Dr. Meera ma'am has around 19 years of teaching experience. Ma'am has also teaching experience for the students from different countries studying in Gujarat, Ayurveda University, Jamnagar, and SDM College of Ayurveda, Hassan, Karnataka. Meera ma'am has around 41 publications to her credit, which includes research papers, review papers, monographs, and many more. Ma'am has also organized various workshops, seminars, CMEs, etc. Dr. Meera ma'am has delivered more than 25 lectures, invited talks, and keynote addresses. Ma'am has been nominated as an editorial board member for Journal of Ayurveda Case Report, a Journal of All India Institute of Ayurveda. Ma'am has also been invited as an editorial board member for International Journal of Ayurveda Research, All India Institute of Ayurveda. That is also comes under IIA. Thank you, ma'am,
for accepting our invitation for the Friday webinar, which is quite popular for social media friends, students and staff, and faculty of the Institute. With these few words, now I would like to invite today's esteemed speaker, respected Dr. Meera K. Bhojani ma'am, to elaborate today's topic on an overview of Prakritis of Ayurveda. Ma'am. Thank you so much, sir. Tayyab, sir. Good afternoon, everyone. My pranams and namaskar to all. Respected Basavaraddi, sir, Indu ma'am, Dr. Vandana, Komal, everyone. At the outset, I would like to thank the organizers for providing me this opportunity and choosing this topic of Prakriti. So, can I share my screen, please? Is it my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. And I hope I'm audible as well. Yes. Yes, ma'am. Right. So, beginning with the topic on Prakriti. Yeah. I'm audible? Yeah, okay. Thank you so much. So, let's begin this topic, Prakriti. This everyone must have heard about this topic, and if not, let me tell you that today the world is very much fascinated towards this particular concept of Ayurveda. This is a very unique concept of Ayurveda. Just now, Dr. Tayyab sir was also mentioning about the celebration of Ayurveda Day, for which All India Institute of Ayurveda under Ministry of Ayush and in collaboration of Morarji Desai Institute, NCISM, CCRAS, RAV. So, in collaboration of all these councils, we had been able to successfully celebrate the Ayurveda Day. And let me also, why I'm telling you about Ayurveda Days, because Prakriti assessment, doing the Prakriti assessment was also one of the agenda of the various themes of Ayurveda year, the Haridin Harghar Ayurveda, in which Prakriti assessment, it is also targeted that in the forthcoming years of Amrit Kal, by the year of 2047, we would be able to estimate almost the prakriti of every individual of Indian citizenship. So, this is how Prakriti has fascinated everyone throughout, not only the country but throughout the globe. As I had been given the opportunity to teach the foreigners also in Jamnagar and Hassan, I was very much surprised that they are very, very interested towards this concept of Prakriti. So, what Prakriti is actually? Yeah. So, knowing Prakriti is nothing but knowing yourself, right? So, it's Prakriti means स्वभाव, और जिसको हम तासीर बोलते हैं, या the nature, the constitution, actually your own constitution, and your own constitution is the beginning of all the wisdom. It's not the Prakriti, knowing Prakriti is nothing but your self discovery. So that's why the public is very much fascinated towards this concept of Prakriti. So what basically Prakriti is, in non-technical terms, if we see, then this is, as I told you, it's a constitution of an individual, and this constitution
of the physical, physiological, and psychological characters. Some of the characters which we are going to see in detail in the coming slides are related to the physical characters, like how the hairs are, how the skin is, how the voice is. Certain physiological characters are there, like say for example how the digestion is, how much the person has perspiration, how much does the person sleep, whether the sleep is disturbed or sound. Then there are certain psychological characters also, like say for example how much easily the person gets angry, how easily the person is able to grasp the things, what is the status of the memory, whether the grasping is good or the memory is good. So these all together, some physical characters, some physiological characters, and some psychological, as well as some moral and behavioral and social characters also. These all together makes the Prakriti. So Prakriti is formed at the very beginning of the life, like when there was fertilization of the sperm and ovum. In Sanskrita, it is the definition given is as Shukra Shonita Sanyoge Yo Bhavet Dosha Utkataha. So at the time of the Sanyog of the Shukra and the Shonit, we carry the genetic material from mother and father in form of the morphological or the gross form of this genetic material is the sperm and the ovum. So when the sperm and the ovum fertilizes in the womb of the mother, that's even before the intrauterine life, at that time itself the Prakriti is decided, and this Prakriti Ayurveda it describes in terms of the dosha utkataha, that is the predominance of one or the two or all the three doshas in equal proportion. It's an psychosomatic constitution of the individual which develops at the time of fertilization, or even after fertilization. There are certain other factors which throughout the gestational period before birth, they decides the constitution, and once the constitution is formed and fixed, it remains constant throughout the life. From birth till death, the Prakriti never changes. So just like the genetic makeup, which is different in every individual, the psychosomatic constitution or the pattern of the dosha in the body. The body means the ayu in terms of Ayurveda means the sharira, indriya, sattva, and atam. So the doshic pattern in all these domains, it is fixed, and very interestingly, it is unique with every individual. No one is alike. Not even the twins are same to same, similar with each other. The reason is the modern gives it the name of the genetic makeup, and Ayurveda says that in terms of doshas, the Prakriti. So, and it's not only that much. The concept of Prakriti, the concept goes even beyond further. That's the Ayurveda says that while giving the treatment, it should be Purusham Vikshya. Every individual, suppose 10 people comes to my OPD with the same complaint of fever, but the medicine for fever to all these 10 people can never be same. Ayurveda gives the concept of personalized, tailor-made treatment, and the base of this tailor-made treatment is the Prakriti. Of course, Dashavidha Parikshas are there. Tenfold the examination of the patient should be done, but priorly the Prakriti of the patient should be known, whether the patient or the Swastha, because we have two broad aims of Ayurveda, that is Swasthasya Swasthya Rakshanam and Aturasya Vikara Prashamanam. For both the fulfillment of both the aims, the Prakriti should be priorly examined, and then a personalized medicine should be given. जो कुरुते
है, हो सकता है वही कुर्ता इंदु मैडम को थोड़ी ना होगा, ये इंदु मैम के ऊपर जो चीज अच्छी दिखती है, उनको जो सूट करता है वो मुझे तो नहीं करेगा, हो सकता है करेगा भी. So this tailor made, this is personalized, tailor made concept. Everybody is unique, and hence the concept of Prakriti is also that unique. And it is, as I told you, it is it is developed, it is predetermined before birth, and because of one or the other reason in the life also, to an extent certain epigenetic factors are also added. It boosts, it modifies the doshic pattern, and once after birth also some other factors are there which may to an extent modify, but then throughout the life the Prakriti remains the same. So it's the intensified state of the dosha which remains constant throughout the life, which is called as Prakriti, and it is the conducive state of dosha throughout life. Although there is one dosha intensified, but still that intensified status, one dosha is intensified, that means the other is naturally recessive to that, dormant to that, compared to one. Say for example, if I say a person is of vata prakriti, that means in that body, mind and everything, the vata dosha is increased compared to pitta and kapha. So this imbalance of the doshas, which should otherwise be termed as roga, because rogastu dosha vaishamyam, but still this status of the dosha is conducive status. It does not always require treatment. It is very very useful for prevention of the disease to cripple inside the body. So this state is conducive state of dosha. That's why it's called as prakriti. Because क्योंकि अगर ये बीमारी वाली अवस्था होती तो इसको हम विकृति बोलते, प्रकृति नहीं बोलते. लेकिन क्योंकि ये कंड्यूसिव है, ये आपको तकलीफ नहीं देती. हाँ, प्रकृति के अनुसार जो डूज एंड डोंट्स, जो चर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो मेंशन की गई है, वो अगर पालन की जाए तो ये प्रकृति है. इट डज नॉट cause any harm. So that's why it is termed as the conducive state of the dosha, which is formed at the time of formation and development of the garbha due to certain self-excitatory causes, and it runs from birth to death. So now we have known that it is the genetically determined relative proportion of the doshas within the normal range. It's called as prakriti. And the answer to why two persons are not the same, whether physically or mentally, the answer is it's due to the unique composition of the prakriti in every individual. So Ayurveda has a particular terminology of the doshas, vata, pitta and kapha, and doshas, different proportion of the doshas, the prakritis are formed. What is the importance of prakriti? The variability, the health disease variability can be known when you get the knowledge of prakriti of a person, because as I told you that this status of dosha is conducive, it is within the normal range, it's not causing any disharm and any disease right now. But then that particular person, say for example of vata prakriti, then that person has more chances to get the disease. So once you decide or once you assess that a particular person is of vata prakriti, then you can at least prevent the or give the advices in such a way that that person will not get in future the diseases of vata. So for the preventive aspect, knowing prakriti is very very important, not only in the swasthya rakshanam, but when you are treating a individual, starting from the
normal state to the pre-disease, that's the Purva Rupavastha, Rupavastha, Samprapti, and even the Upadravas. We have seen certain researches shows that the pre-disease, say for example, like the pre-diabetics, the Prakriti of the pre-diabetics were assessed, and it was found that in a particular Prakriti, the pre-diabetic conditions prevails more in the full-fledged disease of diabetes, a particular more prone, and the complications like diabetic foot or diabetic ulcer or diabetic retinopathy, the complications also a particular person is a particular prakriti is more prone to. So that's how you can predict various things based on the assessment of prakriti. Not only that, as I told you, that different treatments for the same disease has to be planned based on the Ayurveda principles, purusham purusham vikshya. Everybody who looks normal has different machinery, and that's why, because of the prakriti, some people have more prone to some set of disease. Why? The answer is prakriti. And whether can these disease be predicted earlier, and can these diseases be treated individually? Answer to that also is yes, in terms of prakriti. So what's the importance of knowing prakriti? Why I am so much after assessment of prakriti? Why the Ministry of Ayush has also included one of the agenda as prakriti assessment in the Amritkal. The thing is, prakriti is useful in understanding the overall human life, not body but also the mind, the behavior, the social behavior, etc. So overall comprehensive understanding you get through prakriti. You come to know about the health status. The health status is in which range? It's in the range of vata or pitta or kapha, or two doshas together, or sama doshas. So you will come to know about the health status and the disease susceptibility. Which person will have which disease in the future? That can also be predicted if you know the prakriti. Prognosis of the disease progression for a particular prakriti in a particular disease is altogether different. So उपद्रव प्रोग्नोसिस, कौन सा डिसीज किसको जल्दी से क्योर, मतलब किस प्रकृति में जल्दी से क्योर हो जाएगा, और कौन सा व्याधि किस पर्टिकुलर प्रकृति में उपद्रव अवस्था में चला जाएगा. से फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना काल हम सब ने फेस किया, एंड AII हैज द CHC सेंटर आल्सो. तो इन आवर CHC सेंटर वी सॉ दैट ए पर्टिकुलर प्रकृति, हर किसी को तो कोरोना नहीं हुआ ना, और हुआ तो हर एक को सेम ग्रेवनेस से नहीं हुआ ना. किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, किसी को होम क्वारंटाइन से ही ठीक हो गया, कोई तो इमरजेंसी में लैंड अप हुआ, किसी का SpO2 बिल्कुल गिर गया, किसी का SpO2 नॉर्मल रहा. तो दिस प्रोसेस क्यों हुआ? The answer to that also is prakriti, because prakriti is also determining your immunity. The host immunity is guided or directed by the doshic pattern in the body. Understanding the severeness of the disease, that also, as I told you with the example of corona. प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर. भाई हमने किसी की प्रकृति असेस की, जैसे ये पित्त प्रकृति वाले हैं तो इनको गर्म चीजें नहीं खानी है. प्रिवेंशन ना, प्रिवेंशन प्रकृति जानना जरूरी है. इवन प्रमोशन, इफ यू आर गिविंग च्यवनप्राश, सबको तो च्यवनप्राश सूट नहीं करेगा, किसी को त्रिफला चूर्ण देना पड़ेगा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करने के लिए. So for the promotive health care also you need to know the prakriti. And of course I told you that 10 people, if they come with the same disease, fever, I am not supposed to give all of them paracetamol. It's my duty to tail and customize the treatment for each of them based on their prakriti.
So here are certain factors which determine the Prakriti and which govern the Prakriti, and these are actually called as Prakriti Nirmapak Bhava. So as we have already seen that सबसे पहला तो है शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृतिर जायते तेन. So शुक्र और शोणित ये जेनेटिक मटेरियल है Prakriti. Then after the Shukra Shonita fertilization, there are certain other epigenetics also like Kalagarbhashaya Prakriti, Maturahar Vihar, माँ ने इंट्रायूटेराइन लाइफ गर्भावस्था के दरमियान क्या क्या खाया, कैसी चीजें खाई, वातवर्धक आहार लिया जाएगा तो नेचुरली द एम्ब्रियो जो है उसकी प्रकृति मतलब उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में वात की वृद्धि होगी एंड अकॉर्डिंगली that person will be of vata prakriti. Similarly, if it is काल गर्भाशय में कौन सा काल चल रहा है, वय कौन सी है माता की, अगर बिकॉज आयुर्वेदा बिलीव्स कि वय आधारित भी दोषों का अप एंड डाउन होता है. बाल्यावस्था में कफ, मिडिल एज में पित्त और वृद्धावस्था में वात वृद्धि होती है. तो द करंट ट्रेंड ऑफ लेट मैरिजेस, आजकल जो बहुत ही लेट एज में प्रेगनेंसी होती है तो उसके कारण भी वात प्रकृति होने के बच्चे के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो दीज आर द एपिजेनेटिक फैक्टर्स वेयर काल गर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति च गर्भ शरीरम अपेक्षते इज टोल्ड बाय आचार्य चरक. Now what happens after birth? Even after birth there are certain other things. जैसे अभी हमने बात की कि वय काल के अनुसार भी दोषों में इम्बैलेंस होता है, तो वयानुपातिनी, देशानुपातिनी इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन. जैसे कि एक स्टडी हुआ कि जिसमें हाई एल्टीट्यूड पीपल को लिया गया, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को लिया गया और उनकी प्रकृति एंड बेस्ड ऑन दैट only the climatic condition of that particular place, they had certain body characters, the physiological characters and even the immunological characters also. So desha, that is the geoclimatic conditions of a particular place, that also to an extent modifies or decides the prakriti. So there are ethnicity, kula prasakta, that's the familial, desha anupatini, that's what I told you, geographical condition, kala anupatini, time factor, what's the age, on that basis within the normal range the dosha fluctuations occurs. Vayo anupatini and pratyatma niyata. So these are other factors, these are the other bhava visheshaha what Acharya Charak has described in Indriyasthan 1. Coming to how many types of the dosha prakriti occurs. So the answer is ekadoshaja. When there is predominance of only single doshas, it will be 3. And when there is predominance of dvidoshaja together, then again there will be 3. And samadoshaja, when all the 3 doshas are predominant equally, then that is samadosha. So vataja, pittaja, kafaja, these 3 individually ekadoshaja, vata pitta, pitta kapha, vata kapha, dvidoshaja 3 and samadoshaja 1. In total 7 kinds of prakriti. So now what we are going to do is we are going to see individual characters of each of the doshik prakriti. Along with you also can discover yourself. You can see which of these signs and symptoms which we are going to discuss right now, just now, is present in your body and mind, and accordingly your prakriti will be. So now looking to the characteristic features of each prakriti, let us start with the vata prakriti. The body constituency of the vata is always lean and thin. ऐसे लोग कृश बहुत ही दुबले पतले होते हैं. This is because of the गुण of वायु. The gait, उनका चाल ढाल जो रहता है वो बहुत फास्ट होता है. लघु चपल गति ही, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं. और सिर्फ चलना ही क्यों, हर गति, उनकी हर गति
हाथ पैरों की मूवमेंट, अभी भी आप में से कुछ लोग अभी हाथ हिला रहे होंगे, पांव हिला रहे होंगे। सो इनकंसिस्टेंट एंड फास्ट गति ऑफ नॉट ओनली चलने की बट ऑल अदर गतिस ऑल्सो। कुछ लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे खाते हैं, कुछ धीरे धीरे लिखते हैं, जल्दी लिख लेते हैं। तो ये जल्दबाजी, जल्दी वाला जो कंपोनेंट है, ये वात प्रकृति के पास है। उनकी स्किन again because of the ruksha guna, the skin of the vata prakriti is generally rough and dry, बहुत ही ड्राइनेस। तो ये कैसे जाना जाए? आप इनको या तो you can see the skin with your naked eye or you can also put forth certain questions like कितना लोशन लगाना पड़ता है, या वैसलीन लगाना पड़ता है, या नित्य तौर पर आप तेल लगाते हो क्या, बालों में डेंड्रफ हो जाता है क्या, हाथ पैर के तलवे फटते हैं क्या? तो ये सारा वात प्रकृति में ज्यादा देखने को मिलता है। The veins and the tendons are prominently seen on the surface. Generally ये जो कंडरा, शीरा, ये सब दिखती नहीं है। These organs are well covered under the muscles and the cutaneous fat and subcutaneous other viscera, but in vata prakriti the veins are very prominently seen. These persons, the vata prakriti persons, they have excellent grasping power. बोलते ही समझ लेते हैं। श्रुतग्राहीणो, श्रुत मीन्स सुनना, सुनते ही ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मेमोरी बहुत पुअर है, रिटेंशन बहुत कम रहता है, समझते जल्दी है लेकिन याद, उनकी याददाश्त और या स्मृति जो है वो अल्प रहती है। स्पीच, दे टॉक ऑल्सो वेरी फास्ट, जैसे उनकी गतियां तो फास्ट है, बहुत ही चपल एंड लघु है, लेकिन बोलने वाली चीज भी बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं। दीज पीपल आर वेरी टॉकेटिव, शांत रह नहीं सकते। दे आर दी वात प्रकृति। वॉइस, आवाज कैसी है इनकी? रुक्ष जर्जर, इसमें अच्छी मेलोडियस वॉइस इनकी हम नहीं मान सकते हैं। खराश, हमेशा ही गले में खराश बनी रहना, बार बार पानी पीना, या ज्यादा देर तक गा नहीं पाना, या गाए तो वो गाना सुमधुर ना लगना उनका। दिस अगेन इज बिकॉज ऑफ द रुक्ष एंड परुष गुण ऑफ वाता। They continuously keep on moving the eyes, hands, legs, shoulder. Unstableness, वात जैसा चंचल है वात दोष, वैसे ही ये लोग बहुत ही चंचल रहते हैं। द अनवस्थित अक्षी भ्रू पाणी पाद, कुछ लोग बैठ ही नहीं सकते, कंटिन्यूअसली हाथ तो हिलाएंगे, सर हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे। तो दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ द चल गुण ऑफ वात दोष, ये वात प्रकृति में देखने को मिलता है। वेरी वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, एक जगह जो बैठ ना पाए, फिजिकली एक्टिव, क्विक इन इनिशिएटिंग एनी एक्शन, और खाना भी बहुत ही जल्दी जल्दी खाते हैं। चपल आहार विहार। ड्रीम्स, नॉट ओनली just a minute please, excuse me. हेलो, हाँ 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 हाँ, बंद कर दो, रूम बंद कर दो। हाँ, so Ayurveda does not stop over here. They also talks about the dream, what kind of dreams such person gets. Of course, the science of dream says that knowing about anybody's dreams altogether is not that easy, and it at many times becomes absurd. But I would like to mention कि ऐसे छोटे छोटे characters
ऑफ ड्रीम्स वगैरह भी फॉर पर्टिकुलर प्रकृति स्पेसिफिक ड्रीम्स बताए गए हैं। आकाशचारी स्वप्नेषु, दीज पीपल, क्योंकि ये खुद चंचल होते हैं और लघु होते हैं और वायु हमेशा लाइटर होता है, सो ये उड़ते हुए या गिरते हुए या कहीं ऊंचाई वाले स्थान पर गए हुए या दौड़ने वाले, ऐसे उनको सपने दिखते हैं। कमिंग टू पित्त प्रकृति, these people, the skin has plenty of moles, pimples and freckles. Prabhuta tila vyangaha, it is supposed to be because of the ushna guna of pitta. ये इनको ज्यादा पिंपल्स होते हैं, ज्यादा इनको तिल होते हैं या मस्से होते हैं। So the pitta prakriti has this particular symptom. I hope I am audible and my slides are also moving. Yes, ma'am. Okay, thank you. The another very specific characteristics of pitta prakriti is इनको बुढ़ापा जल्दी आता है। उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण के कारण चमड़ी में झुर्रियां आ जाना, बाल पक जाना, बाल गिरना, गंजापन आ जाना, ये सारे पित्त प्रकृति के सिम्टम्स माने जाते हैं। तो this also we have seen in one of the researches that in the healthy individuals also nowadays it is very commonly seen that लोगों को, बच्चों को भी बाल बहुत जल्दी पक जाते हैं। हालांकि ये प्रकृति बेस्ड नहीं है, वो तो विकृति है, आज का खान वगैरह इस तरह हो गया है। बट द पर्सन्स हु आर अदरवाइज हेल्दी, ऐसे हेल्दी लोगों में एक सर्वे किया गया which were the healthy individuals of the young age, the middle age, जो युवावस्था के हेल्दी पीपल थे, उनमें देखा गया कि जिनकी पित्त प्रकृति थी उनका रिंकलिंग ऑफ द स्किन वगैरह बहुत जल्दी, वी हैव सीन विद द स्किन टोनोमीटर्स and the instruments that the wrinkling was also very easily and early prematurely seen in the pitta prakriti persons, and probably the answer to this is the ushna guna of pitta. Again, because of the ushna guna, such persons, they have ushna sharira mukhaha. There are certain people, उनका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही रहता है। They don't have fevers, उनको बुखार नहीं होता है, लेकिन टूवर्ड्स द हायर साइड ऑफ द नॉर्मल रेंज हमेशा उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा मतलब अगर आप थर्मोमीटर से मुंह का टेम्परेचर नापो या एक्सिला का नापो, टेम्परेचर विल बी a little higher and that does not cause any problem to them. So such kind of things, or in other ways we can also, ऐसे लोगों को, पित्त प्रकृति वाले लोगों को माउथ अल्सर्स, बार बार मुख पाक हो जाना, मुंह आ जाना, मुंह में अल्सर हो जाना, ऐसी कंप्लेंट्स इनको ज्यादा देखने को मिली गई। Then the looseness of the muscles are laxed, loose, tightness नहीं होती, that's because of, क्योंकि पित्त मृदु है, so शिथिल मृदु संधि मांसाह, the sandhis, the joints are not that sturdy, उतने robust joints और muscles इन लोगों के नहीं देखे गए। and क्योंकि रक्त और पित्त इन दोनों के बीच में आश्रय रिलेशनशिप है, इसलिए इन पित्त प्रकृति द रक्त की सारता देखी जाती है, इसलिए द nails prakriti persons and even the eyes of the pitta prakriti persons are reddish in color, rakta netra, and it's very easy, they are very prone to get आप जैसे थोड़ा भी धूप में जाएंगे तो उनको आंखें लाल हो जाना, या थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे तो आंखें लाल हो जाना, ये कॉमनली देखा जाता है। They become very angry quickly, जैसे वात प्रकृति के मेंटल साइंस एंड सिम्टम्स में हमने देखा कि श्रुत अल्पस्मृतय, ऐसे पित्त में these people they become angry very quickly,
क्षिप्र कोपह is seen. Excessive thirst and hunger, बहुत ज्यादा खाना और पीना, बहुत प्यास लगती है और बहुत भूख लगती है, क्योंकि अग्नि उनका डाइजेशन बहुत क्विकर है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्टर है. They have excessive sweating with foul smell. स्वेदनो दुर्गंध, पसीने से बदबू आती है और पसीना ज्यादा भी आता है. So such people, they need to use more perfumes and deodorants etc. या तो पाउडर लगाना पड़ता है. What about the dreams of Pitta Prakriti? They dream about fire, lightning. आकाश में बिजली हो रही है, या पीले कलर की आग लगी है, या पीले कलर के फूल दिख रहे हैं, जंगल में आग लगी है, दिए जल रहे हैं. तो अलग अलग फायर के ड्रीम्स पित्त प्रकृति को आते हैं. Coming to Kapha Prakriti, the body is well proportionate and stable gait. जो चलते हैं सारगति, चलते एकदम ही सारवान, और जैसे मार्च पास्ट करते हैं ना, उस तरह कुछ लोग चलते हैं. So the body, क्योंकि the body is heavy but at the same time well proportionate. The skin is soft and smooth. But these people are very slow in initiating actions. मंद चेष्टा, बहुत धीरे से काम करेंगे शुरुआत में. Certain people are आरंभे शुराहा. We all know about the story of the rabbit and the tortoise. The rabbit is of the Vata Prakriti and tortoise जो धीरे धीरे शुरू करता है लेकिन लास्ट तक ले जाता है. That is the Kapha Prakriti. The eyes are big. The Prasanna Darshana Anand say delayed grasping. जैसे Vata Prakriti श्रुतग्राही है, ये चिरग्राही है. The Kapha Prakriti tube lights. They cannot understand very quickly. जल्दी समझेंगे नहीं, लेकिन एक बार समझ लिया तो they have good retention power. उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है. वात का ग्रास्पिंग अच्छा है, मेमोरी कम है. स्लो ईटिंग हैबिट्स, मंद आहार, धीरे 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 खाना खाएंगे. लाइक टू स्लीप, हमेशा सोना पसंद करेंगे. खड़े हैं तो बैठना पसंद करेंगे, बैठे हैं तो लेटना पसंद करेंगे, लेटे हैं तो नींद करना, ज्यादा से ज्यादा नींद करना पसंद करते हैं कफ प्रकृति. लेजी पीपल, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप, स्थिर मित्र, इनके मित्र कम होते हैं लेकिन स्थिर, बचपन से लेके सालों सालों तक मित्र. अब आपका जो ये प्रोग्राम है वो फेसबुक लाइव है ना, तो फेसबुक पे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन these मित्र कैन नॉट रीड योर फेस, बट इतने सारे फ्रेंड्स आजकल बनते हैं, उतना ही जल्दी गाढ़ी मित्रता नहीं होती, उतनी जल्दी मित्रता टूटती है. लेकिन कफ प्रकृति दृढ़ होते हैं, स्थिर होते हैं, इसलिए उनका मित्र धन भी सौहार्दपूर्ण और स्थिर लंबे समय तक चलता है, बट कम मित्र होते हैं. स्कैंडी थर्स्ट, हंगर एंड स्वेटिंग, भूख ज्यादा नहीं लगती, अग्नि मंद है, पसीना भी ज्यादा नहीं आता क्योंकि अंदर शैत्य ज्यादा है. शीत, कफ के शीत गुण के कारण ऐसा होता है. और वो उनको ड्रीम्स, उनको सपने में ग्रीनरी या पानी या जल, तालाब, नदी, तैर रहे हैं, पानी में हंस या पानी में कमल खिले हुए, इस तरह से पानी के ड्रीम्स, स्वप्ने जलाशय लोकी, ऐसा होता है. सो वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ each of the doshika prakriti. Of course, this is not all. To know the prakriti, we should understand it in detail. Today I'm just supposed to give a review, or just an overview has to be given. So I have just told you about certain characteristic features of the doshika prakriti. What next after knowing the prakriti? What whenever मैंने आज तक बहुत सारे प्रकृति कैंप किए हैं, तो अगर मैं किसी की प्रकृति असेस करती हूँ, उनको बताती हूँ कि भाई आपकी पित्त प्रकृति है, इमीडिएटली पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अब क्या, उससे क्या? तो उससे ये है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. जनरली द पित्त प्रकृति, starting with the diet for vata prakriti, the vata prakriti should take nutritive diet. The food should be fresh, warm and moist.
they should take frequent meals but small meals, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है. They should avoid fasting, उपवास व्रत लंघन वगैरह उनको नहीं करना है, because the agni is vishama and the guna of pit, the vata is a shita, so they should use spices also in cooking, but that spices should not be much stringent और बहुत ज्यादा तीखा ऐसा नहीं होना चाहिए. They should take creamy things, hot cereals और creamy soups वगैरह, butter, cream, दूध, घी, ये सब इनके लिए अच्छा है. Eat sour, sweet and salty substance because तीन रस जो वात शामक है वो है मधुर, अम्ल और लवण, और वात प्रकृति में ऑलरेडी वात दोष बढ़ा होता है, इसलिए ये तीन रसों का सेवन फायदेमंद रहता है. अवॉइड पोटैटोज, टोमेटोज, चिलीज, बहुत ज्यादा स्पाइसेस लें लेकिन चिली वाली स्पाइस ना लें. Consume more steamed and moist food. Ingest herbs to digest the heavy foods. And the person should be advised to eat in calm and quiet atmosphere. For the Pit Prakriti, on the slides you can see what the person should prefer and person should avoid if the person is of Pitta Prakriti. So consume more bitter and astringent in form of food and herbs, because तीन रस जो पित्त शामक है, मधुर, तिक्त और कषाय, ये ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करने चाहिए क्योंकि पित्त उष्ण तीक्ष्ण है. So hot foods like onion, garlic, chili, fermented things because pitta amla bhi hai. Fried foods and excess salt should be avoided. The consumption of sweet fruit should be promoted, advised. ज्यादा पानी पीने की भी सलाह इनको दी जाए. Consume cold, heavy and moist food. Avoid alcohol and smoking because of the pitta nature. Balanced diet mainly consisting of sweet, bitter and astringent taste will be preferred. Water should be taken excessive. Water should not be much hot. Coffee, alcohol and black tea should be avoided. Pickles, vinegar, chilies, bakery products, fermented products, canned food, fast food, preserved food should all be avoided. And इनको भी ज्यादा उपवास करना नहीं है. कफ प्रकृति के लिए भी यहाँ आप देख सकते हो कि what they should consume and what they should avoid. कफ के लिए all the millets are very good like बाजरी, ज्वार, रागी, ये सारी चीजें उनके लिए अच्छी रहती है. They should consume more dry, less fatty and light food. The food should be light. It should be having less caloric value, but it should be more in in volume. जैसे सलाद की कैलोरी कम है लेकिन वॉल्यूम वाइज ज्यादा, ऐसी चीजें कफ वालों को ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए. They should be consuming the spices because Agni is manda and kapha is शीत. Avoid too frequent eating. ज्यादा मात्रा में और ज्यादा बार frequency eating also should not be much for the kapha prakriti. Eat pungent, bitter and astringent substances since these three tastes are kapha shamaka. Avoid too much sweet or fatty food. Even avoid salty and sour things and avoid milk products. So occasional fasting is good for kapha prakriti. Food should be warm, low fat, high carb and without sugar and fat. The kapha prakriti should consume. Cold things like ice cream, cold water, frozen things should always be avoided. Even the lifestyle planning also should be done based on prakriti. Like vata prakriti should be advised for massage with oil and avoid excess thinking and talking. Daytime small naps are good for the vata prakriti. Generally, diva swap is contraindicated as per Ayurveda, but for vata prakriti, छोटी सी नींद, नैप एक झपकी दिन में भी लेना बात के लिए ठीक है क्योंकि इतना ज्यादा उनकी मूवमेंट्स होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, they get tired easily. Strenuous exercise, the exercise which cause exertion should be avoided. Yogasan इनके लिए बहुत अच्छा है. Pitta, they should enjoy pleasant music
and they should try to spend their time near water reservoir, reside in the homes which are equipped with fountains. Such small advices in the lifestyle also helps a lot. Avoid excessive exposure to the sunlight. For pitta, for kapha, exercise and massage with dry powder, जिसको उद्वर्तन बोलते हैं, has to be preferred. Vigorous exercise like swimming, jogging, cycling, running should be advised for kapha prakriti persons, and they should specifically advise to avoid day sleep. दिवास्वा कफ के लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है. वात को wake up at least. This is the detailed lifestyle planning has been given for the vata prakriti. This is for the pitta prakriti, and lastly this is for the kapha prakriti. Similarly, as we have seen for vata, pitta and kapha individually, what about the other? As we know that there are 7 kinds of prakriti, तो इसमें से 3 हमने देखी. अब द्विदोषज वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ के लिए क्या किया जाए? तो the prescriptions which are suitably told for the vata and pitta individually, they should be suitably integrated and administered to those who have vata pitta prakriti. And the lifestyle for vata should be advised during the monsoon and rainy season, and pitta lifestyle should be advised during the sharad ritu, that is summer and autumn season, and combination of both these season charya should be advised for vata prakriti. The lifestyle advice for the pitta kapha prakriti, similarly you have to integrate the lifestyle and diet which is told for pitta and kapha individually, and the lifestyle for pitta which should be in pitta kapha prakriti जो शरद वाली ऋतुचर्या है वो फॉलो करना चाहिए, और ये जो वसंत वाली ऋतुचर्या है वो फॉलो करनी है. तो यहाँ पर when the person is of pitta kapha prakriti, तो शरद और वसंत ऋतुचर्या का कॉम्बिनेशन करके एडवाइसेस देनी पड़ती है. सिमिलरली फॉर वात कफ प्रकृति, the lifestyle advices for the ritucharya of monsoon and of that of the autumn, वर्षा ऋतुचर्या और वसंत ऋतुचर्या का कॉम्बिनेशन करके you have to give the advices for lifestyle and diet for the vata kapha prakriti. And for the samadoshaja prakriti, sama prakriti, which is generally considered as the best, यहाँ पर the person should be advised to follow the normal life based on the different season and the circadian rhythm of day and night. This, thank you so much. I hope I have done the justice to the topic and I have completed within the stipulated time period given to me. So thank you everyone present over here for your patient listening, and once again thanks to the organizers. If any questions are there, I'll be happy to answer that. मैं एक प्रश्न चाहूंगी, जी, अगर गीत में हर एक चीज को समझाया बताया, कुछ ऐसा भी है कि इन जनरल हम व्यवहार में उतारें उसको और हमारी बात पित्त कफ प्रकृति मेंटेन रहे, जी, ऐसा जी, भी कुछ प्रोटोकॉल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एक तो आयुर्वेद के अनुसार जो प्रोटोकॉल ऋतु के अनुसार है, सीजन बेस्ड जो प्रोटोकॉल है वो तो जनरली सबको ही फॉलो करने की आवश्यकता रहती ही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट इट ऑन द स्लाइड, देयर आर सर्टेन जनरल गाइडलाइंस लाइक अवॉइड डे स्लीप. दिन में तो सोना अवॉइड करना ही है, रात को दही नहीं खाना चाहिए. Irrespective of whatever your prakriti is, one should try to avoid consuming the curds and the curd products in the night time. In the daytime that can be consumed. Amla or triphala at least should be consumed by all irrespective of any prakriti. तो भोजन के पहले लवण आर्द्रक
थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा अदरक ये लेना चाहिए। खाना खाते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ना खाना खाने से पहले ना खाना खाने के एकदम बाद, बिल्कुल तुरंत तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। खाने की शुरुआत मधुर रस से करनी चाहिए, बीच में कटु लेना चाहिए और एट द एंड इट शुड बी तिक्त एंड कषाय। तो इस तरह से ये कुछ जनरल एडवाइसेस है। सबको मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। योगा प्राणायाम और ये ध्यान मेडिटेशन, ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्रकृति हो, हर एक को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा बॉडी एंड माइंड बैलेंसिंग एंड स्पेशली योर स्पाइन को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ऐसे आसन जो है, इस ऐसी चीजों में प्रकृति असेस करने की जरूरत नहीं, दे कैन बी एडवाइज टू ऑल। सो दीज आर सर्टेन जनरल थिंग्स। काइंडली एक्सक्यूज मी, आई फॉरगॉट टू पुट इट ऑन द स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हम बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर हम सभी को, जो आपने अपने अनुभव से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज चुना और हम सबके बीच अपने ज्ञान को साझा किया। अपनी मधुर वाणी से उस बहुत सहजता के साथ आपने इन विषयों को हमारे समक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हम सभी का, मुझे लगता है हमारे श्रोतागणों का, आज सभी का बहुत सौभाग्य रहा होगा कि आज आपको सुनने का मौका मिला और जिस सहजता से सरलता से आपने विषय को समझाया, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा अनुभव रहा आपको सुनना। आप इसके लिए मैं एक बार पुनः हम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मोरारजी के निदेशक महोदय, जिनकी प्रेरणा से हम नित्य नए कार्यक्रमों का संचालन करते रहते हैं। आज ये फ्राइडे वेबिनार का जो क्रम है, ये पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय है जो बिना रुके हर सप्ताह ये कार्यक्रम आयोजित होता है। सर, आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े संचार एवं प्रलेखन अधिकारी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी तकनीकी टीम का, जो कि इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, सारी व्यवस्था को बनाते हैं। उस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे श्रोतागणों का, जिनके प्रोत्साहन से और जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर नए आयाम को छू रहा है। नित्य नए वक्ता के रूप में हमें इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम का समापन शांति पाठ से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you so much, sir.